I welcome you all. I feel privileged to extend my warm welcome to all presented over here for the AICTE Training and Learning Academy's 1 week faculty development program on smart cities. I am Rani Borkar on the behalf of Department of Civil Engineering, Government Engineering College Bilaspur. Welcome you all on the fifth day's first session. I am overjoyed to take this opportunity to introduce our resource person of this session, Dr. Amba Sethi. Dr. Amba Sethi is currently working as psychologist in Ekam Clinic, Raipur, Chhattisgarh. She has completed MBBS from Gandhi Medical College, Bhopal in 1990 and was always a merit student. She completed MA in psychology and secured a gold medal from Ravi Shankar Shukla University, Raipur. Followed it up with a PhD in psychology. She continued learning more in her field by going to various national and international workshops on neuro-linguistic programming, life coaching, clinical hypnotherapy, life skills, access bars, science and spirituality, and past life regression, and also on energy psychology. In this journey, she also became a meditation teacher. She does individual counseling sessions for parents, children, couples, for various relationship issues, marital issues, and for depression, anxiety, OCD, and bipolar illness. She conducts various workshops on stress management, emotional intelligence, parenting, mental health, relationships, etc. in various institutions. She is a master trainer for prevention of child sexual abuse for Chhattisgarh. She is trainer with Chhattisgarh Prashashan Academy and also with the police training school. I welcome our resource person for this session, Dr. Amba Sethi. Please, ma'am. Thank you, Indrani. Thank you so much. Thank you to all of you for honoring me by able to speak in front of all of you. And coincidentally, today is also the World Suicide Prevention Day, 10 September. So it's a day when we must all become aware of how important mental health is. You know, mental health and what is a smart city. आपका जो development program चल रहा है, it is based on smart cities. And can a city be truly smart without its individuals, which constitute the city, being happy, being mentally healthy, being physically healthy? Right. So I think it's a very good day also. It's 10 September, World Suicide Prevention Day. And the best way that we can prevent suicide is to be happy, look after our mental and physical well-being, look after our happiness, increase our happiness. So thank you so much. And I hope whatever the introduction, the degrees, all these are okay. They are okay for purpose that we need to educate ourselves. We need to gather information. But in truth, a human being can only be defined if we can actually learn, earn, and return. This has been beautifully said by, I think, if I am correct, it has been quoted by Ratan Tata. Learn, earn, and return. That initially we all are in a phase of learning. Then we begin to earn. And then is the time we start returning to humanity. We start returning to the society. We do something for the humanity. So I wish this talk, this discussion on the topic of happiness and well-being can at least make a difference in maximum number of people's lives. Then I think the purpose of the talk is met. So going ahead with our topic, and please note down any questions you have. How much time do I have, Indrani? Till what time can I speak? Ma'am, 10:15, we will end this session because Okay. from the Okay, so I next will session try will and be end there. it by Yes. 10 o'clock so that people can ask questions for Yes. 15 Yes, ma'am. minutes, right? Yes, ma'am. Yes. Okay, Yes, ma'am. perfect, fine. So going ahead on happiness and well-being. So in smart cities, I think a very important the happiness and well-being of its individuals. So let us start by looking at what exactly is happiness. What is well-being?
right? See, in well-being, if you see, it is the experience of health, whether it be physical health, then happiness, prosperity, right? It also includes, if you see, good mental health. Well-being, a very important component of well-being is good mental health. There is high life satisfaction, and there is a sense of meaning or purpose, right? And of course, we have to have the ability to manage stress, because this was this wonderful question put forward by somebody, that who is it that has no problems? And the answer was, it is only the dead who don't have problems, right? So you see that all of us will have problems. All of us have to learn to cope with these problems, to manage our stress better, right? So more generally, if we say what is well-being, it's feeling well and have a balanced life, all the aspects of life, whether it be mental health, whether it be physical health, whether it be relationships, whether it be work and our own career, whether it be spirituality, whether it be fun and entertainment. When we have a feeling well in so many areas of life, that is what we would call actually well-being. Now, well-being and happiness, as you see, that they're very closely interrelated. So if we just take this part of what is happiness, right? Happiness is it's kind of an electrifying state. See, it gives us so much energy. Why electrifying? Electricity, all of you know better than me that it's a form of energy. So happiness basically gives us energy. It's an emotion which provides us with a lot of positive energy. So it's actually an electrifying and an elusive state, because we, all of us, are finding happiness. We are finding happiness in one thing, then we are finding happiness in another thing. So for a lot of us, it is an elusive state. And more than simply positive mood, if you see, it is a state of well-being, living a good life. There is a sense of meaning, and there is deep contentment, right? So very carefully, you see that it is very important that we, all of us, focus on our happiness. And now, why are we talking so much about happiness and well-being? How these are all researched, right? This is there is all this has come out of scientific research. So this is not merely a speculation or merely an imagination. But why it is important that we talk about happiness is that, number one, if I want to be physically healthy, happiness will help me being physically healthy, right? So when people researched, they found that happier people have stronger immune systems, and this will actually reduce your risk of developing common cold and chest infections. They also found that happy people and happiness has been found to have effect on our blood pressure. They have less blood pressure, and which is a major risk factor for heart disease. And truly, when they related happiness with heart disease, so they saw that being happy was associated with 13 to 26% lower risk of heart disease. Also, it was linked to longevity. What is the age till which you will live, right? You will live longer if you're a happier person. And also, happy people felt, the intensity of pain was less. So it basically, if you had any kind of pain but you are a happier person, it will actually help you reduce the pain. This fact was very beautifully illustrated by Buddha. He said, dukha dukha, we have dukh, we have pain, but we often suffer that pain, because we will go, oh my god, I'm in so much pain, oh my god, I'm in so much pain. So that increases our suffering. See, that is why it is called, we suffer our suffering. Or some people explain that there is pain and there is suffering. Pain, so many times we can't avoid, right? But what is suffering is that when we have pain, we go on and on, instead of accepting it, instead of dealing with it, we go on and on suffering it. So that is why we say that, suppose I'm happier person, ki, okay, I have to deal with it, I'm resting, I'm peaceful, it will actually help me better to deal with my pain rather than suffering my pain. Also, if they did a study in older adults, that they found that happy people had a lower risk of stroke, right? And also that being happy promotes a healthy lifestyle. Overall health was improved because happy people tended to eat healthier diets. See, if I'm happy, we know we've been seeing that obesity has been linked to eating a lot, right? And what happens in, why do we eat a lot?
So depressed people tend to eat a lot because they are deriving their sense of pleasure from eating. So suppose I'm not happy with generally life, no. So what will happen? I will start feeling depressed. Now to feel happy, what will I need to do? I will have to eat more, or I will have to eat unhealthier things, because then that junk food, that oil, that grease gives me a pleasure sensation. So that's how I get trapped in a vicious cycle. And also, in the modern times, eating disorders have increased a lot, right? Eating disorders where people are binge eating, they are eating unhealthy diets. So see how happiness promotes us, our overall health. It will also prevent us against obesity, right? So if you see that, it is really important, like happiness is important in every area of life. Okay. Happier people are also more likely to be physically active. Naturally, I said that, see, it's an electrifying state, because what, it gives us a lot of energy. If all of you just think of a time when you were really happy, how did you feel? Were you energetic or were you lazy? Just think of a time, and just imagine a time when you were depressed. How did you feel? Did your body have energy? Did you feel like getting up and going to work? Did you feel like going and meeting people, talking to them? So, if you see that happier people are more likely to be physically active, and once I'm physically active, I will get all the benefits of being physically active: stronger bones, increased energy levels, decreased body fat, lower blood pressure. So, see how so many things are interlinked. Also, happy people have better sleeping patterns, and we know that sleep is really important for rest, for rejuvenation, and for memory consolidation. So, overall, if we see that there is a very positive impact of happiness on physical health, right? Now, happiness and productivity. Happy people are more productive at work, because so many times we think, oh, these people are too happy, they are not serious enough, they will not be able to work well. But happy people are seen to be more productive at work, and they earn more, right? One second, I have missed one slide of happiness and mental health. So if you see that, there was a research published in the International Journal of Indian Psychology, which found that happiness contributed to well-being, and it directly reduced the chances of having mental disorders like stress, depression, and anxiety. Right? Therefore, happy people were found to have greater psychological and physiological well-being. So all present over here, I request all of you on this day today, 10th, a decision that I am happier and more healthier. I'm going to really take attention to my mental health, and I'm going to work towards increasing my happiness. Okay, so before telling you more details about how to work on your happiness, the first thing I would want you to do is decide how happy are you. Suppose you take a scale of 0 to 10, where 0 being the least happy and 10 being the most happy. Where do you stand right now? So, for yourself, this is the most important thing you can do, evaluation. Because as adults, what are we supposed to do? As adults, aren't we supposed to take responsibility of our own happiness? Are we just supposed to stand like this and keep waiting that people should come and make us happy? That, oh, when this happens, I will be happy. When this happens, I will be happy. That is called I will be happy when syndrome. I'm waiting for things in my external environment to be a certain way for me to be happy. And answer me, or answer for yourselves, is there anybody in the world where external things in the world are just the way they want them to be? That all situations are exactly the way they want them to be? All people are just the way they want them to be? So it is time that we have to focus our attention on ourselves, right? We have to start taking, as adults, if I remain in blame, if I keep blaming the other people, that you did this, so I'm unhappy, you make me unhappy. We may blame our spouses, we may blame our children, you're not studying, you're not getting results, so I'm unhappy. We may blame our spouses that, you are not doing this, so I'm unhappy. So today, make a decision that I'm responsible for my own happiness. I'm an adult.
and I need to take responsibility for my own happiness instead of waiting or instead of remaining trapped in I will be happy when syndrome. That I will be happy when my spouse does this. I will be happy when my children behave or my children listen to me. I will be happy when when I get a promotion. So instead of waiting, let us start by being happy now. The present moment is all we have. We will discuss about this a little later. So for now, what are the major emotions? Write down on a scale of 0 to 10, how happy are you just now? And what are the major emotions you feel during the day? Are you sad? Are you depressed? Are you anxious? Are you angry? Are you irritable? What are the major emotions? Because till the time I don't know what I'm feeling, or what I'm feeling, is it a negative emotion? Is it a positive emotion? I can't manage it. Anybody who, this was this beautiful, I was taking, this was a very beautiful discussion I had with in one of my talks. So one of my talks, we were talking about anger, and I, I was explaining to them that anger, how anger, can trouble, how it can cause problem in relationships, how it can cause a lot of blood pressure in you. So this person comes up to me and asks that, see, I am very clear, right? If I'm angry, I'll go and shout, I'll shout, and after that, I'm perfectly calm and peaceful, and what is inside me is outside me. I'm not a fake person that inside I'm feeling angry and outside, I'm not showing my anger. So it works for me. I don't want anger management. Okay, I said, fine. You don't want anger management because you feel that your anger is appropriate or justified. But I said that, do you feel that the people whom you got angry on, will they be happy with you? Aren't you causing hurt to those people? And as human beings, should we go on causing hurt to other people because I am angry? Because things didn't go the way I wanted them to go? What is anger? Very specifically, that I am angry because somebody is not doing in my reality what I want them to do. So I make myself so important that everybody should listen to me. And if anybody doesn't do what I wanted to do, I get angry. And then in that anger, I hurt those people. So see how much self-awareness is important of how your emotions affect the other people also. So that is why they said there was a man who, started moving around and he said, I'm going to change the world. I'm going to make, people realize the value of happiness. So he tried, talking to people, changing the world. Nobody was willing to change. Then he said that, okay, I'll change the people in my country. He tried changing. Nobody was willing to learn. Then he said, okay, at least I'll change my city. Nobody was willing to learn. Then he came back to his neighborhood. Okay, at least I'll change my neighborhood. Nobody was ready. He said, okay, at least I'll work on my family. Nobody was ready. He finally said, let me start with myself. I will start remaining happier. I will start talking to people about happiness, but I have to walk my talk. I have to actually be the change. And when he started staying happier, the family people around him, no, they started staying happier, because emotions are very contagious. It is called emotional contagion. That if there is a happy person at home, everybody starts feeling happy. If there's an angry person at home, it causes a lot of stress to other people also. That is why, so much so, just for one slide, self awareness, that please understand, taking responsibility for your own happiness. It is exactly like when you throw a pebble in the pond. What happens? Its ripples move outwards. So when you start focusing on your own happiness, you start remaining happier. Your entire family will remain happier. So please, to all of the people attending this, that please become aware how much you need this, because if we are not aware, if I'm not aware of the emotions I'm feeling, I can't change them. If I'm not aware of what my emotions are, how they are affecting the other people, I will not change them. So we start with self awareness, because what you know with clarity, only that you can manage, right?
We move to the second step, that is determination. Right? Are you determined? Because if I'm not determined, if I have formed one pattern of remaining sad, remaining straight faced, like we call, remaining serious, or remaining unhappy, or angry, or irritated, I will literally have to have a very strong determination that I have to change my life. And along with my life, my health will change, my family will be happier. So, and to do that, the first step is that you will have to believe that you can change your life, right? Most people think, I can't change. When I don't have the belief that I'll change, then the next steps can never happen. So, initially, you have to first believe that a change is possible. Only then we can move on. And what I'm giving you here is basically a lot of information. I'll be telling you about different ways to be happy, how you can just choose to be happy. But whether you use this information to bring transformation in your life will solely depend on you, because transformation is a process which can only occur when I am determined to change, when I am focused on my own self, when I spend all my energy. There's this beautiful statement, where you place your attention is where you place your energy. Right? So now, if I place my attention on myself, I place my attention on my mental health, only then can I change. So please, to all of you, there will be a lot of information, but if you really want to transform your life and you want to transform the lives of the people living around you, you must use this information for bringing in a transformation in your life. Otherwise, it will not make sense. It will be like any other lecture you hear for, one day you feel good, you remember things, and the next day you're back to your programming, your default setting of your mind. Right? So we need to become aware that what is my default setting, right? These are all default programs which have already been installed in our mind. So what is my default setting at this 0 to 10 level? Where am I? How can I increase? How can I actually step up this happiness? With that determination, if you work, only then this transformation will be possible. Then moving ahead to transformation, right? How? What all do we need to transform? Right? So if you see that, this is a beautiful thing described by Dr. Joe Dispenza, that my life's personal reality. Now, my personal reality in life will include my mental health, my physical health, my relationships, my career, my spirituality, my friends or my friendships, right? Everything in my life's personal reality. What is it determined by? It is determined by my personality. So today, my personal reality is determined, or if you may call it old, or if you may call it present personal reality, is determined by my present personality. Right? Now, what is personality? Personality is basically the way you think, the way you feel, and the way you act. Now, what happens? Suppose I need to change the personal reality of my life. If I want to change my, just let's, for example, since we are talking of mental health, if I'm a very serious person, or if I'm a sad person, I need to change how my mental health is, right? Which means I will have to change my thoughts, I will have to change my feelings, I will have to change my actions, which means that my personal reality, a new personal reality which I need to create, will be determined or will happen only when I change my personality. The mistake which we make, that we remain the same personality. We don't change our thoughts, we don't change our feelings, we don't change our actions, but we secretly keep expecting my life will change, something in my personal reality is going to change. Right? That is not possible. If I want my personal reality, anything in my personal reality, a very simple example, if I want to lose 2 kgs of weight, won't I have to change my actions? I will have to change the way I eat. I will have to start walking or start doing exercise. So you just see how simply personal reality or different aspects of the personal reality of our life will have to change. For example, somebody has done wrong to me, right? And I continuously I'm feeling angry, this person has done wrong, this person has done wrong, he shouldn't have done it, I'm never going to forgive him. What am I doing? In my thoughts, I'm holding on to grudges and resentments.
When I'm holding on to grudges and resentments, am I going to be a happy person? So just imagine, and the moment I change my thoughts, the moment I start thinking, let go, release, forgive, what will happen? I change my thoughts, I become a happier person. So I want all of you to deeply understand that till the time you don't change your personal reality in life will not change. And if I need to change my personal reality, what I need to change is to form actually a new personality. Change the way I think, change the way I feel, change the way I act. Only then true transformation is possible. So, like coming to the first part, right, which we have, that change our thoughts, change our feelings, change our actions. Okay, thoughts. Now this is such a beautiful theory that this is a beautiful story that one person was walking. We used to call them padyatri or rahagir. Those people used to travel walking on foot. So one person walking comes to a place where there is a lot of stones, there are lots of rocks, and there are three different people who are sitting and who are working with what we call cheni hatodi. उससे लेके they are actually breaking those rocks. So he walks up to the first people and he asks कि what are you doing? You are sitting here. What are you doing? Are you involved in some work? So he says, दिख नहीं रहा है, पत्थर तोड़ रहा हूँ. So this person says, ठीक है, okay. He goes ahead and he goes to the second person who's breaking the stones. He walks to the second person and he asks, भाई क्या कर रहा है? What are you doing here? So that person says, जीवनी कमा रहा हूँ. अब परिवार है, पालना है, तो जीवनी तो कमानी पड़ेगी. So, okay. This traveler, he goes to the third person. And that third person has a very calm and peaceful appearance on his face. The same question he asks the third person, भाई तू क्या कर रहा है? And the third person says, भाई मैं बहुत लकी हूँ, मैं ना भगवान की मंदिर बना रहा हूँ. Now you see that three people were doing the same work. The situation was the same, the work was the same. How, what they thought about their work, how they thought about what they are doing actually caused them to feel in a certain way. If you see that the first person, he was so irritated, he was so angry, he thought he was very unprivileged, he was ungrateful, right? The second person was okay, not very happy, not very angry, but somewhere in between, straight faced, what we call, right? He was just doing what he was supposed to do, but with no kind of dedication or no kind of happiness, right? And you see the third person, what was he was in a state of such calm and peace because he was so grateful, he was feeling so involved in the work he was doing. So you just imagine that how our thoughts about what we are doing today or where we are today will really influence the way we are feeling. So they say that the way you think is the way you feel. And why thoughts are given so much important? Because every thought I think is creating my future, right? Everything. For example, if I want to make a simple thing, like suppose I want to make a table at home, right? What will I have to do? I will have to first think that, oh, I need a table. And once I think that I need a table, I think about it, then I will start thinking that how do I get it made? So then I will start thinking ki, what is the design I need? How, which carpenter do I call? Which wood do I use? What is the color? What are the size? So everything, whichever has come into my life, first came as a thought. And these are thoughts, and thoughts can be changed. If something which is causing me problem, if something which is causing trouble to me, I can change these thoughts, right? And I have the power to choose my thoughts. And chemically, what's happening in my body, that wherever goes with it, wherever. If I'm thinking a positive thought, there's a positive chemical, a happy hormone released. If I'm thinking a negative thought, then there's a negative chemical associated with it. And your genes, they tune into your thoughts and emotions and they are turned. And that is why they thought that the people who are, they did this research, that the people who are chronically depressed, they are 4 times likely to fall sick. And every new thought that we think creates a new pattern of brain activity. So
So it's, you have to literally become very aware that your thoughts are very important things. And we often have, you know, what we call cognitive distortions, that there are various ways in which our thinking is distorted. We make generalizations. For example, if we meet one wrong doctor, we'll say all doctors are bad, right? If we meet one wrong politician, we'll say all politicians are bad. These are generalizations, right? Then we do mind reading. Mind reading, somebody has not said something, but I say, oh, I know this is what you're thinking. See, our thinkings are often distorted. Fortune telling, I know nothing good is going to happen to me, nothing can ever happen in my life. See how the way I'm thinking is the way I'm feeling, right? So moving, that was just a brief to let you know that we have a lot of distortions in our thinking patterns which we have to become aware of. Moving to emotions, like I said, that the way we think is the way we feel, right? Now you imagine that there is a person, for example, a child has failed in his exam, and he continues to think, I can't show my face to anybody, this is the worst thing that has happened to me, I can never go, I'm not going to ever make it in life, my life is ruined, my future is ruined, I really can't do anything. Don't you think this child is going to feel depressed? And now there's another child who's also failed. But he thinks, okay, yaar, I didn't study. I think this failure is a learning lesson that I must start working hard in life. And IQ is just a threshold competency. Whatever marks I get, I'm not attached to my performance. I'm not attached to my marks. But it's okay. Whatever marks I get, I have to create a beautiful life. See, such a child is going to feel less depressed. So you see how our thinking is related to our emotions. And surprisingly, 70 to 80% of chronic lifestyle diseases, blood pressure, diabetes, asthma, allergies, autoimmune diseases, are linked to negative emotions. So how important it is to, if I want to stay physically healthy, it's important that I stay happy, right? Because there is this mind body connection. And you know, we are the only creatures on earth who can change their biology by what we think and feel. Our cells are constantly eavesdropping on our thoughts. It's like they are listening to our thoughts, and we are being changed by them, right? The moment somebody gets a bout of depression, their immune system is absolutely in wrecks. And when we fall in love, our immunity is at the best. And you know that despair and hopelessness raise the risk of heart attacks and cancer, thereby shortening life. Why joy and fulfillment will, you know, keep us healthy and extend life. And a remembered stress releases the same hormones as the stress itself. Suppose there's some stressful event and I come back and I keep thinking about it. Oh my God, this was horrible. Bahut kharab tha. This was absolutely terrible. So what will happen? A remembered stress releases the same hormones as the stress itself. So when I was facing that stress, I was releasing a lot of stress hormones. But when I'm coming home and again going through that stress, I'm releasing the same negative chemicals. So, how important our thoughts, our feelings are, and our actions. When we do yoga, when we do meditation, when we walk, when we dance, how when we are eating, how we are praying, everything affects our body. Everything. So that is why, and these are basically all the actions which have a very positive effect. Are we eating? Why eating? I've written here. Are we eating mindfully? Suppose I'm drinking a cup of tea. Am I just, you know, gulping it down? Or I'm drinking that cup of tea mindfully, savoring. It is called savoring, you know, just tasting it, enjoying the flavor literally. So, mindful eating is really nourishing to the body. Praying, walking, all these forms. Of course, I can talk for 2 hours, but because we have less time, let's move ahead. We have a lot of things to discuss. So, because this is a very important part, how do we move from unhappiness to happiness? Right, we've spoken about thoughts, feelings, and actions. And in each of these things, see, we will have our own thoughts, we will have our own feelings, we will have our own actions. So first, till the time I don't define happiness, how will I ever move from unhappiness to happiness? So these are being given by Professor Raj Raghunathan has done a lot of work on happiness. He's a happiness researcher. He's related to this ISB.
School of Business, Hyderabad, and he's a professor in University of Texas, I think, University of Texas. So if you see, he's defined happiness in different ways. That what is happiness? For some people, happiness is a sensory pleasure, good food, parties, vacations. Now you see, this is very short lived. Then for some people, because as soon as we eat food, till that time I'm feeling good, I'm feeling ki, wow, very tasty. But the moment, 2 minutes, I feel good, and after that what I feel, so many times I may feel guilt, or I don't feel the pleasure anymore. That pleasure is only there till the time that those senses are being stimulated, right? So this is a very short lived pleasure. This is just very, it's not true happiness. Then hubristic pride. What is hubristic pride? Is happiness being superior to other people. Oh, I'm better than this person. I'm the best. This kind of happiness heavily relies on what other people are. The moment somebody comes who's better than me, I'll start feeling unhappy. So this is also not a very good measure of happiness, right? These measures from authentic pride are better and more stable measures of happiness. Like we say, what is authentic pride? Is mastery at something. So for example, that I am, feeling good that I'm reading psychology a lot, or there's a musician, who's working hard at his music, or he's, really practicing his music. So there is a sense of authentic pride. Yes, I'm good at my work. Then for some, for like happiness as a love or connection, relationships, they give us a lot of love. A lot of people have said that the quality of my life is the quality of my relationships. So when I spread love, when I, have good relationships, then I'm happier. And also it feels, happiness equals a feeling of abundance. So here by abundance, I don't mean just abundance of money. It means abundance. It means abundance of love, abundance of relationships, abundance of air, abundance of water, abundance of a lot of things that we can imagine, right? But there is so much in the universe that is not for everybody. And feeling this abundance is a result of what is called poverty mindset, right? Poverty is a mindset where we feel that there's not enough for me. There'll always be a lack. Mere paas hoga nahi, mere paas ye nahi hoga. My God, what will happen if I don't do this? So it's basically a feeling of abundance. Then there is happiness as joy, serenity, that I'm peaceful, I'm just blissful, I'm happy, right? Then there is happiness as a feeling of interest or curiosity, that I'm interested, I'm curious, मुझे चीजों में मजा आता है, जानने में मजा आता है, सीखने में मजा आता है, right? Then there is happiness as amusement or laughter, that we we laugh a lot, we spread humor, we can have make we can really have fun, we can crack jokes. So that is basically happiness is amusement or laughter. Happiness as a rich and meaningful life. So Professor Raj Raghunathan, as well as there's another Russ Harris, they say that what is happiness? Madam, your voice is What not is happiness? audible. Your voice is not audible. Can you hear now? Yeah, it's clear now. It's clear. It's clear now. I Yeah, just made the mic closer to me. yeah, it's Is this, clear. you You can may hear now? proceed, please. Yeah. Yes. Okay. Thank you. Okay. So it's very important that we make happiness enhancing decisions. So what are happiness enhancing decisions? I asked somebody that how do you know that what we are saying, what we are doing is the correct thing or not? And I got a beautiful answer that if it increases the peace and happiness, go ahead and do it. If it increases suffering and misery or pain, stop it. This goes not only to actions, this will also go to your own thoughts. Are your thoughts actually increasing your happiness?
or are your thoughts actually increasing your misery? I have to be aware that whether my own thinking is correct. Is it helping me increase happiness? Is it making me a better individual? Is it making me more mentally healthy? Then it's fine. But if my own thinking pattern is basically causing me to suffer, causing me to go into misery, causing me to go into depression, then I'm sure we need to look very carefully into our thought process. So please make happiness a priority. Prioritize your happiness. That it is important that we make happiness enhancing decisions. Then the second thing is self care. So what is self care? Like I said, that we continue blaming other people, right? I'm unhappy because of that. I'm unhappy because of this person. If I continue basically blaming other people, you know what we remain in? We remain as a victim, and a victim can never create a beautiful reality. So we need to move into responsibility, that I'm responsible for my happiness. I have to take responsibility. And when I move into responsibility, what is it that I do? I become a creator. Now I realize I can create happiness, right? I can be happier. I can create good mental health. So blame keeps us stuck in the victim mode, and taking responsibility shifts us from being a victim to being a creator. Excuse me. The next thing, can you hear me clearly? Is my voice clear? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am, it is clear. Okay. So the next thing, very important, that we need to be in the present moment. See, the past is already over, right? The future has not yet arrived. If the present moment, this now is the only thing that I have in hand, and if I don't spend this present moment in awareness, in mindfulness, that this is the only moment, the next moment I don't know. So how can I make? And you see the beautiful part, why is it called the present? It is called the present because it is a gift. You see, another synonym for the word gift is present. So you see how beautiful this moment is. This moment is a gift to us. So in life, try being mindful. Every moment is the only moment in life. Am I going into the past? Remain aware. Do I keep going to the past, or do I keep moving to the future? If I keep spending, I told you one statement, where I place my attention is where I place my energy. If I keep time traveling, if I keep going to the past, if I keep going to the future, I will have no energy left for the present moment. So this is the present moment. From this present moment, I can create a beautiful future, yes. But for that, I have to make the present moment very beautiful. So be in the now, be in the here and now, be in this present moment, make it as beautiful as possible. Now, one thing which is a great barrier to happiness is chasing superiority. It's the nature of the mind, you know. We'll keep comparing. Oh, how much money does this person have? How many degrees does this person have? You know, I have to be better than this person. I have to get more marks. And if you see our entire education system, you know, where we want to come first, we want to come first, we have created this. It's okay. Somebody can come second and still be very happy. Somebody can come 10th and be very happy. So it is that I have to work at my own competence instead of continuously comparing to others. What does he have? What does she have? What is she doing? What is better in her? Does she have better clothes? Does she have a better car? Does she have a better house? So if I keep chasing superiority, what will happen? I will not be able to focus on my competence. It's better, rather than to compare, rather than to chase superiority, or rather than wanting to be the best, focus on your life. How can I make my life better? Yes, we can work hard. We can problem in that. But in earning a lot, in just chasing superiority, I should not sacrifice my happiness. You know, it is often said that, you know, superiority so much that is we lose our relationships, and in the end we are very unhappy. You know, person had said that I met office. So see, that is the reason that we have to remain very aware.
move on to our next, which is healthy relationships. And in healthy relationships, we often where we move to extremes. Sometimes we become very needy and sometimes we become avoidant. Needy means we are totally dependent, that this person has to be there, and this is seen very often in teenagers, that they are clingy all the time. They want somebody, somebody, somebody. And some people move to the other extremes, totally avoidant. We don't need anybody, I don't need anybody, I'm okay alone. They want to stay isolated lives, right? The most important thing is to find a balance. I don't have to be extremely needy, clingy, dependent personality. Neither I have to go to the other extreme of being avoidant. I have to have healthy relationships. And I have, even in the closest of the relationships between husband and wife, we must have space. We must give each other space to do what, even in parent child relationships, parents sometimes become overbearing. They want to control their child's life. What happens? The relationship gets spoiled. So there's Khalil Gibran has beautifully said this in a poem of his, that even the pillars of a temple stand apart. So see, so beautiful that we have to have spaces in our togetherness, and that will keep your relationship very healthy, whether it is parent and children, whether it is husband and wife, any relationship, right? The next most, which causes so much problem, is shoulds. So what are shoulds? We want to control. I should, you should, the world should. I keep having so many shoulds by which I want to keep controlling other people. Answer me this question: what is true power? Does true power mean controlling the other person, or true power means controlling or being in self control? What is true power? See, go back and think, what according to you, any of the participants, what do you think is true power? Controlling other people or being in control of our own selves? Anybody? Would anybody? Yes, anybody can answer. Sense. Yes, ma'am. Around self is controlling ourself is more important than other self. Yes. So controlling ourselves also means that we should take responsibility for our own happiness, right? Instead Yes. of waiting to control that when you do this, I'm going to be happy. We put so much pressure on our children. We emotionally overburden them, that when you get marks, I'll be happy. See, we are trying to control them. We are trying to manipulate. It's different to inspire. What's the difference between controlling and inspiration? Come on, do your best. It's okay. Whatever marks you get, it's fine. But controlling is, you should do this. So to all of us, from today, let us try to control the other people less, and let us focus on self control more. Agreed? Yes. Okay, so keep learning, right? When I keep learning, it may be anything. It is not necessarily that I have to keep learning as far as studies are concerned. I can learn anything. I can learn gardening. I can learn, cooking. I can learn baking. I can learn anything. But when I keep learning, I keep feeling happier, because the human being, the mind itself, the intelligence gets a lot of input when we learn new things. When we learn new skills, the networks of our brain, they start changing. And when I'm learning, I'm focused on my own learning. I'm going to focus less on what the other people are doing. So you remember that where you put your attention is where you put your energy. When you're learning, you are focusing your energy towards your growth and not thinking of what the other people are doing. So learning is a very good way to stay happy. Then find what makes your life meaningful. In for somebody, going and serving the society outside may make life meaningful. For some people, it may be having a lot of friends, doing seva. For some people, it may be just doing prayer. Spirituality may make your life meaningful. So find what makes your life meaningful, and keep a small part of the day to do that thing, right? So each of us, we must find that what makes my life meaningful, and start doing that, even if it means doing that for 15 minutes, 20 minutes. That's okay. Meditation, anything, whichever you feel adds to your life, adds to your happiness, makes you feel better about yourself, makes you a happier person, do that. Right now, this is really beautiful. Trusting more.
others, and life. Now, this Professor Raj Raghunathan, he did a research that when they dropped wallets, they dropped 20 wallets across different cities, and when they dropped these 20 wallets across different cities, uh, they they had an ID card and they had money in those wallets. Okay, now they wanted to check how many wallets will come back to the owner, and in each of them they had the same ID. Now, can somebody guess, out of 20 wallets which were dropped at different areas of the city, how many wallets do you think would have come back to the owner? Guess. Five. Five. Yeah. Okay. Anybody else? Anybody else? Please make a guess. Okay, let's go. I'll tell you the research. And will you be surprised? 16 wallets came back. And they did this not in one city, they did this across various cities. So they found that the perceived level of, the perceived level of trust, we trust people less. See, the perceived level of trust was what? 5 wallets will come back. But what was the actual level of trust? 16 wallets came back. So they saw that this trait, trusting more, trusting others, trusting life, actually made our life happier. So see how we have to improve our level of trusting others, and then we'll be much happier people. So I hope you understood the research. If anybody has any problems, they can ask me in the questions later on. Okay, moving on to the next, gratitude. How many of us remain grateful for what we have? We have eyes, we have ears that we can hear, we have a nose, we have this intelligence, right? How many of us even say that, thank you, thank you, thank you for what I have? We are blessed with so many things. Do we ever say thank you? Are we thankful to the air we breathe? See, today, if I'm eating something on my plate, if I'm eating a rice or if I'm eating roti, some farmer must have grown it. That is why today I have that atta from which I'm making this roti. Am I ever grateful? So see how my life is so interconnected. But am I grateful making my life? How many times the staff working with us? So today is Chhattisgarh, we have this Tyohar. So we are not going to have our staff. How worked up there, but when they are there, are we thankful for their presence? See, gratitude is basically, we have to feel this gratitude. We are really blessed with so many things, and when we feel this gratitude, we'll see that gratitude is the doorway to miracles. Miracles start happening when we start remaining in gratitude. So this is a beautiful exercise given, that make a gratitude list at least before sleeping. 3 things that you're thankful for. Remember and say thanks for every day for 3 things you're grateful for. Can be the soap you use, can be the water you have, anything at all, right? Moving on to forgiveness. Forgiveness is what? Forgiveness does not mean what the other person did was right. Forgiveness means that basically I am not going to hold on to those grudges and resentments and spoil my own life. So I may not even go and tell the other person that, hey, I forgive you. No, that is not required. But internally, even if somebody has not done what I wanted them to do, I can just forgive, let go, release, forgive. Remember, there's this beautiful statement, I forgive you for not being the way I wanted you to be. See, I wanted that person to be a certain way, and that person was not the way I wanted him to be, and that is why I'm holding on to a lots of grudges and resentments. So when I forgive, I start feeling lighter, because I get rid of negative emotions. So forgiveness is not for somebody else, not for the other person. Forgiveness is that I can feel light. Forgiveness is that I am happier, so that I am more peaceful, right? And the next thing is self kindness. Self kindness. There will be times when I may have done wrong. There may be times when I'm not able to do
what I should do. Those are the times when I need to be kind to myself. Self kindness or self compassion is very important. I cannot always be a superman or a superwoman and exactly do what others. I will make mistakes as long as I learn from these mistakes. I'm kind to myself. And like we are talking of forgiving others, we have to forgive ourselves also. Be kind and forgive yourselves. And the last but not the least, helping others. There was this woman who was very depressed, and she went to, there was this very famous psychologist, Alfred Adler. And when she went to Adler and she said, I'm very depressed, Adler sent her back saying, 15 days, go do something good for somebody else. When you do something good for somebody else every day and note it in your diary, that what good are you doing for the others. So when you do good for the others, you will feel good yourself. And actually for 15 days, when that lady, she did good things for other people, when she came back, she was much happier, she was feeling much better, her depression was lesser. So helping others is a beautiful way. And right in the beginning also I said, remember, learn, earn, and return. We must do. There are only two ways to live life. That is fear and separatedness. That we are always in fear, that we are always separate from the others, we are not connected to anybody. And the other way is love, oneness, and interconnectedness. That as a society, as a humanity, we are all connected not only to each other but also to the environment. And in a smart city, you imagine that if we have people who are happier, people who are healthier, people who are more grateful, people who are more trusting, people who are more forgiving, people who are more kind, who are helping, won't our smart city actually become a smart city? Right? So be happy for this moment. This moment is your life. Okay? Remain in the present moment. Thank you so much. Any questions are welcome. Thank you, ma'am. Thank you. Thank So you. I request all the participants to join the discussion and they can ask the question. You can unmute yourself and ask, or you can also post question in WhatsApp group. Hello, ma'am. Are you hearing my voice? Yes, yes, absolutely. Is that Raja? Yeah, yeah. Thank you. Yes. Thank you very much for your kind persuasion regarding mind and wellness. Because Thank without people's peace of mind, the Yes, smart city concept cannot be evolved. So absolutely. I used to perform the meditation because Yes. theoretically and practically, Hmm. whatever the lacunas in your mental stresses are there, it can be Yes. released through meditation, as per my opinion. But Yes. theory is important, pravachans are important to motivate. So, what is your opinion regarding it? Of course, we need to motivate. We'll get a lot of input from talks, from lectures. We must listen because Tony Robbins has beautifully said this. What is your mind? Your mind is what the input is, right? So Yeah, when you keep giving good input, good input, good input, right? They said feed your mind. Tony Robbins says it beautifully. Feed your mind, feed your mind with so much good that one day only good will come out of it. And if you remember, Mahatma Gandhi has said this years back. Oh, the teen bandar, bura mat dekho, bura mat suno. That was yeah, actually because if the input, my mind is like a computer, right? yeah. If the input is not good, how is the output going to be good? So those lectures, meditation is important. Meditation is like cleaning. It's like an inner purification. It's like, switching on the medically. What happens when we are meditating is that we are Yeah, going into an alpha state. The brain waves, they are going into an alpha state, which will yeah, help to heal and rejuvenate our body. So yeah, that is wonderful. It will do very good for your body. But at the same time, for our mind, we must have good input so that we are reminded. The mind has a tendency to go into old patterns, which I called as your default patterns, which I called yeah. as your programming, right? Hmm. So to Sanskara.
Sanskaras, exactly. So impressions, sanskaras, where have they come from? They have come from all the input we've been gathering since childhood, right? Even from the womb of the mother, we start gathering impressions, right? So that is why now, you see, in for the pregnant mothers, there is Garbh Sanskar, that you're giving good input to the child and throughout our growing up process. But once we become adults, we can't remain ki nahi, I had my input was not good, so my life is not good. Now we have to take responsibility. Whatever input was not good, we have to let go. We have to let go and now start taking responsibility for releasing all that was not good and programming our mind afresh. So for that, input is really important, extremely important. Thank you. Thank you. Thank you. I request participants, if they have any query, they can ask. सर आप म्यूट पे हैं. ओके. हाँ हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. आजकल मैडम युवाओं में जो डिप्रेशन की टेंडेंसी बढ़ रही है, हाँ. तो जैसे हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं, 2017 में हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, जी, है ना. हाँ. और वो शी वाज अ ब्राइट स्टूडेंट. जी. उसका 85% से ऊपर था अप टू 7 सेमेस्टर. जी. तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सुसाइडल टेंडेंसी है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें स्टूडेंट के बीच में है, या ये डिप्रेस्ड है, क्योंकि वो बताते तो कुछ है नहीं है. बिल्कुल. तो कैसे अपन इस प्रकार की प्रॉब्लम को अपन हैंडल करें या सॉल्व करें या उसकी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा सवाल है और बच्चों में हमको बहुत ज़रूरी है. देखिए हमने आजकल हम सिर्फ एकेडमिक स्किल्स पे फोकस करते हैं, है ना, और इसीलिए हम सोशल और इमोशनल स्किल्स लर्न ही नहीं कर सकते हैं. SEA होता है, सोशल, इमोशनल, एकेडमिक. तो एक्चुअली हमें पहले सोशल और इमोशनल स्किल्स सिखानी चाहिए, राइट. पर क्योंकि कोई अवेयरनेस नहीं है, हम सिखाते नहीं है, तो क्या होता है, अवेयरनेस ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है डिप्रेशन के साइंस क्या है, हमको पता ही नहीं है कि अगर कोई सुसाइड की बात कर रहा है तो हमको उसको सीरियसली लेना है. कोई भी बच्चा जो जिसने अपने दोस्तों से कभी भी सुसाइड की बात करी, पर ये कब होगा, जब हम अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस देंगे कि अगर ये डिप्रेशन हो रहा है तो आपको ये सिम्टम्स हैं, क्राइंग स्पेल्स है, आपका मूड लो रह रहा है, आप में एनर्जी नहीं लग रही है, आप में प्लेजरेबल एक्टिविटीज करने की इच्छा नहीं हो रही है, आप में सोमैटिक सिम्टम्स हो रहे हैं, सारे जो डिप्रेशन के फीचर्स होते हैं. तो हर कॉलेज, हर संस्था, सब बच्चों को मेंटल अवेयरनेस कि डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, इसके कैंपेन्स करने चाहिए और इनको बताना चाहिए कि इसके लिए थेरेपी अवेलेबल है, इसके लिए काउंसलिंग अवेलेबल है, इसके लिए दवाइयाँ अवेलेबल हैं. इट इज लाइक एनी अदर डिजीज. आज आपको पेट में दर्द होगा, अपेंडिक्स होगा, आप जाओगे ना डॉक्टर के पास में, पर अगर आपको अपनी इमोशंस को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, इमोशनल डिसरेगुलेशन हो रहा है, तो क्या क्या तरीके हैं, राइट. तो जितना हम अवेयरनेस बनाएंगे, इन चीजों को स्टिग्मेटाइज नहीं करेंगे. क्या होता है, पुराने जमाने से चला आ रहा है, अरे डिप्रेशन है, स्नैप आउट ऑफ इट, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाओ. ये सारी चीजें आजकल नहीं चलती हैं. वी हैव टू एक्सेप्ट. इट्स लाइक जैसे फिजिकल इलनेस को हम इतनी अहमियत देते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही हमको मेंटल इलनेस को भी अहमियत देनी है ना. और अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि बच्चों को भी पता रहेगा ना. आज सपोज उसकी कोई रूममेट है, उसकी कोई फ्रेंड होती जिसको उसने बोला होता कि मेरे को ऐसी इच्छा हो रही है, तो उसकी फ्रेंड ने सीरियसली लिया होता. उसकी फ्रेंड को लगा होगा कि अरे ये तो मस्ती कर रही है, ये ऐसी मजाक कर रही है ना. कई लोग कमरे में बंद होना चालू हो जाते हैं कि जैसे बाहर निकलना बंद कर देते हैं, बाहर लोगों से बातचीत, रेड फ्लैग तुरंत कि इसने क्यों आना जाना छोड़ दिया, इसने क्यों मिलना छोड़ दिया, इसने क्यों बात करना छोड़ दिया, ये सीरियस है, इसके बिहेवियर में बदलाव है. तो हॉस्टल में जितने बच्चे रहते हैं, साथ रहते हैं, उनको पता रहेगा ना कि देखो ये हमारा जो बैचमेट है, इसके बिहेवियर में चेंज है,
तो हम उनको अवेयरनेस कैंपेन्स में सिखाएंगे ना कि रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, किन चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना है, खुद के बारे में भी और अपने दोस्तों के बारे में भी. So I think the most important thing is we must have talks on mental health. We must make people responsible. We must tell people कि ये taboo नहीं है. We must talk to them in detail about mental health. Have a lot of mental health awareness campaigns. ठीक, थैंक यू मैडम. Welcome, sir. Welcome. Thanks a lot, madam. Your lecture was very well delivered, and it should be implemented in life. The Yes. thing I learned from you is that happiness must not be temporary on seeing others, and daily we should express our gratitudes. Yes. So maybe we can live long and we should be thankful. And this, the words which you are delivering just now, 48 years before my sister in school, mothers, they Ah, also taught us that daily before sleeping, you should be thankful to God for whatever you have. true, ma'am. So, Absolutely. yeah, so thanks a lot for delivering it. I Thank enjoyed you. your session. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Indrani. So should I take your leave? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. And I want to thank you for your valuable time. And I extend my generous thanks to you. And I want to thank for your sharing your graceful opinion with us. Thank you so much, ma'am. Thank you, Indrani. Thank you. Thank you. Thanks to all of you. Thank you. Thank you. So participants, we will start the next session at 10:15, and our resource person for this session is with us. Nair sir, are you there? Yes, sir. Yes, Good morning. Good morning, sir. good morning, Pranam, Namaste. I am here. Yes, sir. So we will start in 3 minutes, sir, in 10:15. So sir, are you presenting something, PPT or something? I will make you presenter. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So please check once, try to start sharing so that we can see that you are sharing properly. Is the screen visible, ma'am? Yes, sir, it is visible. Please make it full screen when you start. Okay, surely. Yes, yes. Thank you, sir.
Okay, sir. So we will start now. It is 10:50. So, good morning to all. I welcome you all again in the second session of the AICT Training and Learning Academy's one-week faculty development program on smart cities organized by Department of Civil Engineering, Government Engineering College, Bilaspur. I am overjoyed to take this opportunity to introduce our resource person of this session, Shri S.K. Rajiv Nair. He is Corporate Relations Manager, Yoga and Meditation Trainer in Chhatrapati Shivaji Group of Institutions, Durg, Chhattisgarh. He is a certified counselor by NMHP under Government of Chhattisgarh. He is also President of CSIT Alumni Association. He has obtained an MBA degree in Human Resource Management, and he has 23 years of experience in the field of education, engaged with students, stress management, counseling, uh, public and corporate relations, etc. He has conducted practical training sessions in yoga and meditation for the budding engineering students and faculty members of engineering colleges as well as schools. He has conducted live workshops for engineering students and school students on various topics as beauty of inner engineering through yoga and meditation, health engineering through yoga and meditation, and mind-body awareness program, etc. During this pandemic, he has conducted live workshops on the topic Boost Up Your Immunity through Yoga and Meditation for government officers, media heads, professors, and lecturers of engineering colleges and budding engineers. His mission is to create awareness for a healthy living through yoga and meditation. He will be interacting with us on topic Enlightenment of human hardware and software through yoga and meditation. So I invite Shri S.K. Rajiv Nair, sir. Please, sir. Respected ma'am, thank you very much for your wonderful introduction and welcome to one and all dignitaries present in this wonderful platform of Faculty Development Program by AICTE. And first of all, thanks to Government Engineering College Bilaspur, thanks to the management of Government Engineering College Bilaspur, Dr. M.L. Agarwal sir, respected Dr. M.L. Agarwal sir, and Rathore sir, and all the team for inviting me for this program. The session today, the session is Enlightenment of Human Hardware and Software through Yoga and Meditation. Enlightenment of human hardware and software. What is human hardware and software? Hardware क्या है? हमारा body and software is our मस्तिष्क. So before starting this program, a very happy Ganesh Chaturthi to one and all present in this platform. Ganesh Chaturthi की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको. So I will like to have interaction with you all. You know, this program is going to be a different program. You might be attending several faculty development program in which the speaker only speaks and you sit like your audience. I humbly request you from my bottom of the heart that this program is going to be an interactive program. आज 1 घंटा का जो समय मुझे समय बहुत कम मिला है 1 hour. 1 hour will be an interactive session, and I assure you, I promise you that whatever the things today I will just teach you or I will just demonstrate here will be a life-changing thing for you. It will boost up the energy within you. अगर ये जो आज मैं जो 1 घंटे में जो आपको बताऊंगा, अगर 24 घंटे में 1 घंटा समय निकाल कर आपका लाइफ में इसको आप अपनाते हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ जाएगी. लाइक अभी अंबा सिटी मैम ने बहुत अच्छा डिलीवर किया. I was hearing her also. स्वस्थ मन में ही, मस्तिष्क में ही एक शरीर, अच्छा शरीर का निवास. स्वस्थ शरीर में ही मन है. जो अपना जो शरीर है ना, अच्छा मन होना चाहिए और माइंड शुड बी गुड. उन्होंने अच्छा वर्ड बताया. It's highly appreciated. And today is World Suicide Prevention Day, 10th. आज Suicide Prevention Day भी है. So first of all, my voice and I am visible to you, ma'am. My voice is clear. Yes, sir, you are clear and visible.
So can I request these participants to on the camera? कुछ लोग तो कैमरा ऑन कर सकते हैं please. All I think all have switched off their cameras. Can somebody switch on the cameras? See, आज ये जो सेशन है एनलाइटनमेंट ऑफ ह्यूमन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इट विल बी रियली ए बूस्टिंग प्रोग्राम फॉर वन एंड ऑल. दैट इज माई एश्योरेंस. प्लीज कैमरा कुछ ऑन करें कैमरा, ताकि आई विल बी एबल टू इंटरेक्ट विथ यू. So anyway, right now I am addressing from Bhilai, from Chhatrapati Shivaji Institute of Technology. I am a corporate relations manager, as introduction already done. Before starting this program, जितने भी गुरुजन बैठे हैं उनको ये कहना चाहता हूं कि today my instruction, yeah, thank you, somebody has on the camera, thanks a lot, कैमरा ऑन करने के लिए. We are at home. We are not prepared today. That's why camera is not on. Okay. कोई बात नहीं सर, आप जैसे भी हैं बहुत अच्छा लगेंगे. अगर कैमरा ऑन करेंगे ना बहुत अच्छा लगेंगे, और मेरे साथ आज जरूर करेंगे 100%. प्लीज डोंट सिट लाइक एन ऑडियंस. आज मैं जो कराऊंगा छोटी छोटी मैं क्रियाएं कराऊंगा, उसमें आप मेरे साथ रहें. देखिए 1 घंटे के बाद, मुझे 11:15 तक समय दिया है. एक्चुअली सेशन 3 आवर्स का होता है, तो मैं 1 घंटे में बहुत कुछ देने का कोशिश करूंगा. चलें, जितने भी गुरु बैठे हैं, देखिए आज आप लोग जो भी पोजीशन पे हैं, जहां पर भी जिस भी ओहदे पर हैं, आपके गुरु का आशीर्वाद रहा है. तो गुरु को वंदन करते हुए आगे बढ़ते हैं. हम सभी लोग आराम से बैठ जाएं, तो आंखें बंद कर लें. अपने जो गुरु हैं, जिसको भी आप बहुत प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उनको ध्यान करते हुए एक बार गुरु वंदना हम करते हैं. ध्यान से सुने. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए एनलाइटनमेंट ऑफ ह्यूमन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे आगे बात करते हैं. व्हाट इज ह्यूमन हार्डवेयर? हार्डवेयर हमारा शरीर है, करोड़ों खरबों रुपया का इस शरीर. सॉफ्टवेयर हमारा मस्तिष्क है. जैसा मस्तिष्क, अच्छे विचार, मस्तिष्क का खाना क्या है? व्हाट इज द फूड ऑफ आवर ब्रेन? इट इज ए वेरी गुड थॉट, पावरफुल थॉट. तो आज जैसे अंबा सेठी मैडम ने बताया कि बहुत अच्छे, जैसे थॉट के ऊपर रहता है पूरा हमारा जीवन जो है. तो इस प्रकार हमारा अच्छा थॉट, उसको कैसे, थॉट को, नेगेटिव थॉट को कैसे कन्वर्ट करना है पॉजिटिविटी में. सी आई एम ए काउंसलर. हम काउंसलिंग करते हैं बच्चों को. हम मेडिटेशन के थ्रू बच्चों में जो फियर है, अननोन फियर है, कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको हम बढ़ाते हैं. ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, व्हाट वी हैव सीन दिस ड्यूरिंग पैंडेमिक, द बिगेस्ट कैजुअलिटी ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक वाज द फियर. डर के कारण लोगों में, मतलब जो कैजुअलिटीज हुई, द बिगेस्ट कॉज वाज फियर. उसके बाद भी जो साइड इफेक्ट है, मेनी ऑफ द बिगेस्ट डिसीज नाउ इज दैट मेंटल डिसीज. आप देखेंगे पूरा ग्लोब में, आप देखेंगे आज लोगों में मानसिक तनाव बढ़ गया है, मानसिक टेंशन, अननोन फियर, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. तो इस प्रकार के कई सारे, जो कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आ गई है, ये पूरा सॉल्यूशन जो है, इट इज इनसाइड यू. विदाउट एनी मेडिसिन यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विथ मेडिटेशन, विथ योर डे टू डे रूटीन एक्टिविटी. 1 घंटा अपने ह्यूमन हार्डवेयर, अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अपने शरीर को दे, इस खरबों रुपए के शरीर को दे. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 23 घंटा जो है आप बेहतरीन रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे. आज उसका एग्जाम्पल करेंगे हम लोग साथ में. बहुत सिंसियर होके करेंगे, बहुत बहुत सिंसियर होके. मैं करपत्र निवेदन करता हूं, मेरे साथ आप सिंसियर होके करेंगे. सो माय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इन इंग्लिश, मिक्सर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज. सो आगे बढ़ते हुए जस्ट थियोरेटिकल कम रहेगा. आगे बढ़ते हैं. देखिए कंडीशन ऑफ दिस प्रोग्राम. आप लोग तो कोई कैमरा ऑन नहीं किए हैं, नोबडी हैज स्विच ऑन द कैमरा, कोई बात नहीं.
ये लेकिन इस कंडीशन को आप जहां भी घर में बैठे हैं, wherever you are sitting in the office or where, because ये जो क्रिया है, जितनी भी आसन से हम लोग जमीन में बैठ के करते हैं, but all are sitting in on the chair, तो हम भी चेयर में बैठे हैं, चेयर में बैठे बैठे करने वाले और सिंपल सा मैं आसन बताऊंगा, और जमीन पे बैठने वाले भी मैं आज आपको बताऊंगा, जो आप सीख के रोज कर सकते हैं। अगर डाउट है तो मेरा ईमेल आईडी भी दूंगा, तो आप मेरे को, मुझे जो भी डाउट है आप यू कैन मेल मी, आई विल बी देयर विथ माय हेल्पिंग हैंड्स। स्थिरम सुखम आसनम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस प्रोग्राम। अगर इस प्रोग्राम से आपको फायदा चाहिए, if you want to get benefit from this program, the first condition is स्थिरम सुखम आसनम। that means आप जहां बैठे कंफर्टेबल बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी आराम से बैठे, कंफर्टेबली बैठे, कोई तनाव नहीं। 1 घंटा बाकी सब चीज छोड़ दीजिए, अब 1 घंटा भी नहीं बचा है, उसको बाकी छोड़ दीजिए। सेकंड इज 10-10। स्क्रीन दिख रहा है? My screen is visible to you, respected faculties, dignitaries? Yeah, it's visible, sir. Okay. What do you mean by 10-10? 10-10 से क्या तात्पर्य है? You might have seen many advertisement of clock, watches in the newspaper and hoarding where it is mentioned 10-10, 10:10. That indicates smile. That is face value, मुस्कान। कहते हैं वो व्यक्तित्व तब तक और अच्छा नहीं बनता जब तक उस चेहरे में मुस्कान ना हो। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर अगर मुस्कुरा सकते हो तो वह जिंदगी है। During the time of failure, during the time of tension, during the time of turbulence, during the time of pandemic, if you are able to keep smile on your face, then surely you will come back to success. That is the power of smile, that is the power of मुस्कान। तो मुस्कान बना के रखें। आप घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, जहां भी बैठे, मुस्कान नहीं भी आ रहा होगा, आर्टिफिशियल मुस्कान बना के रखें, नकली मुस्कान बना के रखें। मुस्कान में शक्ति है। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, आने वाले 1 घंटा समय मेरे सेशन में आप इंटरेक्टिव रहें, सिर्फ बैठ के नहीं देखें, एनालिसिस मत करें, छोटे बच्चे बन के बैठे, 1 घंटा गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करते हुए बैठे। नेक्स्ट इज क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ योर आईज। आंखें बंद करना, खोलना। ड्यूरिंग दिस सेशन में आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट यू टू ओपन योर आईज, क्लोज योर आईज एंड ओपन योर आईज। व्हेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू close your eyes, so you have to close your eyes. When I will request you to open your eyes, you have to open your eyes with blinking of your eyelid. आंख का पलक को blink करते हुए धीरे धीरे खोलना है, तुरंत नहीं खोलना है, because science, according to the science, the eye is the door of our brain. आंख जो है हमारा मस्तिष्क का द्वार होता है, इसलिए जब भी हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब आंखें जब खोलना होता है, आंखें इमीडिएटली नहीं खोलना चाहिए, आंख को पलक को ब्लिंक करते हुए खोलना चाहिए। और नेक्स्ट है, ड्यूरिंग दिस जर्नी, अगर आपको कुछ, डोंट बी एन हडल ऑफ योर इमोशंस। जैसा मुस्कान आए तो मुस्कुराना है, हंसी आए तो हंसी को नहीं रोकना है, अगर रोना आए तो आंसुओं को नहीं रोकना है। इस जर्नी के दौरान हो सकता है किसी को इस प्रकार की फीलिंग आए, तो अपने विचारों को नहीं रोकना है, जो विचार आ रहे हैं आने दे, अपने इमोशंस को नहीं रोकना है। बहुत जल्दी से मैं एक समय के अभाव के कारण ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ह्यूमन बॉडी हमारा, देखिए एनाटॉमी के बारे में जस्ट बताता हूं। ह्यूमन बॉडी इज असेंबल्ड विथ मेनी सोफिस्टिकेटेड, डेलिकेटेड एंड सेंसिटिव ऑर्गन्स व्हिच कैन बी कोरिलेटेड विथ हाई-टेक मशीनरी पार्ट्स, व्हिच इज फर्स्ट ऊपर से लेते हैं ब्रेन इज मोर पावरफुल देन द सुपर कंप्यूटर, इट इज हैविंग द कैपेसिटी टू स्टोर मोर देन मिलियंस ऑफ डाटा। तो क्या वी आर एबल टू गिव प्रॉपर ऑक्सीजन? हम क्या प्रॉपर ऑक्सीजन देते हैं ब्रेन को? देखिए, हम जनरली जो है ना, जितना ऑक्सीजन लेना चाहिए उससे बहुत कम, 20 to 25% एक नॉर्मल व्यक्ति ऑक्सीजन लेता है। तो ऑक्सीजन में कितना पावर है? द पावर ऑफ ब्रेथ। मेरा इस कार्यक्रम आधारित है पावर ऑफ ब्रेथ से। पावर ऑफ ब्रेथ, सांस कैसे लेके एक एक ऑर्गन में सांस को प्रॉपर कैसे पहुंचाना है, और सांसों के जरिए हमारा विचार को कैसे चेंज करना है। जैसे सुइसाइडल जिसको थॉट आता है, सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू हमने चेंज किया उनका विचारधारा को। मेडिटेशन के थ्रू, सिर्फ मेडिटेशन करके हमने उनके जो थॉट प्रोसेस को चेंज किया है। इतना शक्ति है मेडिटेशन में, आज आप एक्सपीरियंस करेंगे। हो सकता है कई लोग के डे टू डे लाइफ में दे यूज्ड टू डू योग एंड मेडिटेशन, बट देखिए बहुत लोग गलत भी करते हैं। मैं कल भी एक सेशन था मेरा फायर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए,
जो बोलते थे कि हम करते हैं, उनसे जब पूछा गया तो कई सारे छोटे छोटे चीज मिस्टेक करते हैं, तो उसे उतना फायदा नहीं हो पाता। प्रॉपर रिदमिक वे में, राइट पैरामीटर्स में उसको फॉलो करके डिसिप्लिनरी तरीके से, लयबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से करने से ही फायदा मिलता है। सो नेक्स्ट अपना आई सी, ह्यूमन आई इज 576 प्लस मेगापिक्सल कैमरा, इतना सुपर पावर है। द ऑलमाइटी पावर जो शक्तिशाली ने बनाया, इतना अच्छा लेंस हमको बना के दिया। क्या प्रॉपर हम ऑक्सीजन लेके, ऑक्सीजन के थ्रू हमारा आंखों का, हम आंखों को हम क्या बोलना चाहिए, उसको प्रॉपर ट्रीट करते हैं। आंखों में रोशनी बढ़ाना और चश्मे का पावर कम करना इस प्राणायाम के थ्रू, इस सांसों के जरिए, पावर ऑफ ब्रेथ के थ्रू संभव है। So the best lens designed by the powerful is our eye. आगे देखते हैं नोज, इसके बारे में आगे बताएंगे। नोज इज द नेचुरल प्यूरिफायर, सांस, नाक से लिया हुआ सांस ब्रेन में टच करते हुए, गले से होते हुए डायफ्राम से कैसे लेते हैं, इसकी विधि बताऊंगा। Teeth is the grinding machine of our human hardware and software. देखिए हमारे पेट में ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं होता जो हमारे खाने को अच्छा से डाइजेस्ट कर सकता है। टीथ इज द ओनली थिंग। इसीलिए कहते हैं कि 20 से 32 बार प्रॉपर सॉलिड थिंग को चबा चबा के उसको जूस बना के उसको खाना चाहिए। तब क्या है, देखिए मैक्सिमम डिसीज स्टार्ट्स फ्रॉम आवर स्टमक। मध्य प्रदेश जो है, पेट जो है, शरीर हिंदुस्तान है, पेट मध्य प्रदेश है। मैक्सिमम प्रॉब्लम मध्य प्रदेश अपना स्टमक से ही स्टार्ट होता है। तो स्टमक को अच्छा रखेंगे, स्टमक डिसीज फ्री रहेगा, तो एंटायर शरीर हमारा अच्छा रहेगा। तो अच्छे से च्यू करके खाना है। टंग इज अ सेंसर मशीन। Tongue is having the capability to chew, it is having the capability to taste 2000 से 4000 इनविजिबल टेस्ट बड है जो इतना शक्तिशाली है। उसमें हम ऑक्सीजन के थ्रू हमारे टंग कुछ और अपना शक्तिशाली और अच्छा उसमें काम कर सकें, उस कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। हार्ट, इट इज अ पावर ऑफ आवर बॉडी, इट पंप्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड्स। हम देखिए सांसों के थ्रू, छोटे छोटे आर्टरीज में, वेन्स में जो भी ब्लॉकेजेस है, सांसों के थ्रू कैसे उसको क्लियर करना है, ये आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज किडनी। नेक्स्ट, ये सब टाइम काफी लग जाएगा इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं। स्पाइनल कॉर्ड इट इज वर्क्स लाइक एन शॉक अब्जॉर्वर। गाड़ियों में शॉक अब्जॉर्वर होता है, उसके जैसे ही हमारा रीढ़ की हड्डी होती है, पूरा शरीर को बैलेंस बनाता है। कहीं भी अगर डिसफंक्शन हुआ तो पूरा एंटायर शरीर हमारा, हम प्रॉपर खड़ा नहीं हो पाएंगे। सी, आई एम हैविंग ए स्पेशल सेशन फॉर द पीपल सफरिंग फ्रॉम बैक पेन, साइटिका पेन, जॉइंट पेन, दैट इज पिनका, स्पाइन केयर एक्सरसाइज। इट इज ए 4 hours ऑफ प्रोग्राम फॉर 5 days। ये मैं करवाता हूं। नी, हमारा घुटना, देखिए इंडस्ट्री, नी कैन बी कंपेयर्ड विद द बियरिंग्स इन द इंडस्ट्री। वी कैन सी द पीपल इन द इंडस्ट्री, दे यूज्ड टू पुट प्रॉपर ऑयलिंग विद प्रॉपर टाइमिंग फॉर दिस प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दिस बियरिंग। क्या हम हमारे नी में क्या कोई ऑयल डालते हैं, या आप लोग कभी केयर किए हो? नहीं। मैक्सिमम प्रॉब्लम आफ्टर 40 years, 40 साल के बाद घुटने में जो दर्द होता है वो बिकॉज ऑयलिंग की कमी के कारण। तो पहले से ही आप उसमें सतर्क रहें, उसमें आप अवेयर रहेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो घुटने में कैसे शक्ति पहुंचाना सांसों के जरिए, वो भी देखेंगे आज। नेक्स्ट इज पावर ऑफ ब्रेथ। मैं कह रहा था पावर ऑफ ब्रेथ, हीलिंग पावर ऑफ ब्रेथ। व्हाट इज पावर ऑफ ब्रेथ? सांस लेना छोड़ना। सी, सब क्लियर है आप लोगों को? प्लीज 2-3 लोग मेरे को फीडबैक देंगे। डोंट बी ए सिंपल ऑडियंस, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू। आप लोग सब गुरुजन लोग हैं, मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, आप प्लीज इंटरेक्ट करें मेरे साथ। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय AICT। टुडे इज माय 165th लाइव वर्कशॉप, and thanks to All India Council for Technical Education for giving this wonderful opportunity and involving this subject in this faculty development program. क्या इंटरेक्ट करेंगे मेरे से, बात करेंगे कुछ लोग? Yes, sir. सर क्लियर है इमेजेस एंड माय वॉइस इज क्लियर? सब चीज ठीक है सर? Images are clear, voice is clear,
and voice is very enthusiastic and energetic. No problem. Thank you for your motivation. See, the biggest quality of a human being is appreciation. किसी को appreciate करना the biggest quality है. बहुत लोग इतने कंजूस होते हैं, इतने माइसर होते हैं, कंजूस होते हैं कि appreciate नहीं करना जानते. See, आपका एक word appreciation का ना उसका पूरा दिन बना देता है उस व्यक्ति का. किसी में अगर कुछ अच्छा quality दिखे, you try to appreciate him. कई लोग ना appreciation मन में ही रखे रहते हैं. See, once again I am repeating, the biggest quality of a person to appreciate. किसी को बूस्ट अप करिए, किसी को इंस्पायर करिए. सी दिस यूनिवर्स में हमको जो जिंदगी मिला, हमको लाइफ मिला है, वन टाइम लाइफ है. नेक्स्ट सी हमको क्या लाइफ में जाएंगे हमको नहीं मालूम. जब तक हम जिएंगे स्वस्थ रहना है. जान है तो जहान है. अच्छा हेल्थ जो है अगर होगा तो पूरा दुनिया का रंगीन चीज हम महसूस कर सकते हैं. अदरवाइज हर चीज हमको ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगा. तो हमारे ऊपर ही है हमारा हेल्थ पैरामीटर. तो आज प्रॉपर ऑक्सीजन के थ्रू, प्रॉपर प्राणायाम, आसन और छोटे छोटे क्रिया के थ्रू हम रोज हमारा जिंदगी, हमारा डे को कैसे स्वस्थ बनाना, अच्छा बनाना है. आपका कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ेगा. आप में अंदर अगर कुछ चिड़चिड़ापन है, कुछ है, देखिए पावर ऑफ ब्रेथ के से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. देखिए अगर फूड एंड वाटर अगर हम नहीं लेंगे, वी कैन सर्वाइव फॉर 30 डेज. अगर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं तो हम 3 मिनट से ज्यादा नहीं रह पाएंगे. तो ऑक्सीजन का क्या इंपॉर्टेंस है आज देखेंगे. अगर ऑक्सीजन लेते हैं, प्रॉपर सांसें लेते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स जो है क्रिएट होता है, वो जो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैप्पी मूड. तो इनहेल एंड एक्सेल ऑफ ब्रेथ, एक्सेल एंड इनहेल, ये हम आज देखेंगे. आगे पावर ऑफ थॉट प्रोसेस. देखिए हमारा थॉट, हम जैसा सोचते हैं हमारा लाइफ में ऐसी बन जाता है. हम अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा आएगा. किसी के बारे में अपन घृणा रखते हैं, जैसे सी हमको वर्तमान में रहना है. वर्तमान अटल है. बिकॉज yesterday was a history, tomorrow is a mystery and today is the present, so that it is known as the gift. तो वर्तमान में रहना है और बहुत खुश रहना है हमेशा हमेशा. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर माइंडसेट. इट इज आवर माइंडसेट दैट कि हमको हैप्पीनेस चूज करना है, सैडनेस चूज करना है, अपन को अपॉर्चुनिटीज और ऑब्स्टिकल्स ऑल डिपेंड अपॉन आवर माइंडसेट. 5 elements, आगे बढ़ते हुए 5 elements of our body, that is either earth, fire, air and water. अर्थ क्या है? देखिए 5 जो धातु है, अर्थ जो है, अर्थ मैक्सिमम लोग हम लोग जो है अर्थ को खाते हैं. अर्थ के बना हुआ आइटम लाइक छोले भटूरे एंड ऑल खा के अर्थ आइटम, तेली आइटम, ये सब खाते हैं. खाने से क्या होता है कि हमारा पेट भी पृथ्वी जैसा हो जाता है. डाइनिंग टेबल बन जाता है, उसमें रख के हम चाय पी सकते हैं. इतना बड़ा बड़ा पेट. सी अगर चेस्ट से बाहर आपका स्टमक आ रहा है, देयर इज समथिंग टू टेक केयर ऑफ. वो अच्छा सिम्टम नहीं है. See fire, you have to eat fire. What is fire? बाप रे, फायर को कैसे खाएंगे? Fire, that means sunrise, सूर्य. सुबह रोज जो है सुबह जब उठते हैं, आपके बालकनी या आपके गार्डन या आपके छत में जाके 10 से 15 मिनट सूर्य का रोशनी लीजिए. बहुत ही अच्छा है. जनरली हमारा लाइफस्टाइल घर से बैठे, कार में बैठे, ऑफिस में गए या क्लास में लिए, सूर्य से बचते हैं. सूर्य. एयर, नेक्स्ट एयर क्या है? प्राणायाम. आप प्राणायाम करें, नेचर वॉक करें. मॉर्निंग वॉक करते समय भी देखते हैं कि कई लोग बात करते करते चलते हैं. प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग इज चलते समय ब्रिस्क वॉकिंग करिए और बीच बीच में गहरी सांस ले. पूरी तरह ऑक्सीजन हमारा जब लंग्स में जाएगा तब शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है वो पूरा बाहर निकलेगा. वाटर, पानी जो है, पानी को खाना चाहिए. देखिए बंगाली लोग क्या बोलते हैं, बंगाली जल खाबो वो लोग खाने को. तो पानी को चबा चबा के पीना चाहिए, सबसे बेस्ट मेथड. और पानी पीते समय कभी खड़े होके नहीं पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए. खड़े होके पिएंगे तो लॉन्ग रन में आपके जॉइंट्स पेन होते हैं. इसलिए पानी को कभी भी बैठ के पीना चाहिए. ईदर स्पेस, दैट इज उपवास करना चाहिए. हमें समय देखते हुए हमें हमारा स्टमक को, हमारा इंटेस्टाइन को, हमारा पूरा एंटायर ह्यूमन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को हमको रिलैक्स करना चाहिए, उनको एक रेस्ट देना चाहिए. चलिए, 5 elements of our body, that is either earth, fire, air and water. Earth, क्या है? देखिए 5 जो धातु है, 5 जो जो चलिए
सभी लोग मेरे साथ करेंगे एक्टिविटी, यस और नो, कि सिर्फ ऑडियंस बन के देखेंगे? कम से कम 2-3 लोग तो बोलें, तभी मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा बोलने के लिए। यस यस यस। बाकी लोग बात क्यों नहीं कर रहे? आई डोंट नो। पता नहीं, ये तो फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट एफडीपी आई एम अटेंडिंग, गिविंग दिस प्रोग्राम, जहां कोई बोल नहीं रहा है। इवन द होस्ट भी नहीं दिख रहे हैं इसमें। Yes, sir, I am here, sir. अच्छा अच्छा, हाँ नहीं दिख नहीं रहे हैं, बट वीडियो सबका ऑफ है इसलिए बोल रहा हूँ। जब अगर इंटरेक्ट करेंगे तो एक एनर्जी आएगा और लगेगा कि कोई देख रहा है, लेकिन सब ऑफ करके रखें वीडियो। सी हम मेन सब्जेक्ट पे एंटर करते हैं, योगा, योग साइंस। द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज, which means to unite. Yoga is the combination of mind, body and soul. Yes. अच्छा लगा वीडियो ऑन किया आप लोग। See, yoga is the precious gift of our Indian Asian tradition. We can see that entire world has accepted our this technique, yoga. See, sometime a year before I used to visit United Arab Emirates. मैं वहां देखा हूं कि मैक्सिमम लोग जो हैं they start their day to day life with योग and meditation. योग आज पूरा विश्व एक्सेप्ट किया है। चलिए मेरे साथ आप स्टार्ट करेंगे। सभी तैयार हैं? कम से कम बोलिए यस और नो। ऑल आर रेडी विथ मी? मैं बहुत पावरफुल क्रिया करवाऊंगा आप सबको। क्लैपिंग थेरेपी, वी विल स्टार्ट विथ क्लैपिंग थेरेपी। इस पर राइट है, बोलने से इस प्रकार हाथ रख लें और क्लैपिंग थेरेपी स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि सब चेयर में बैठे हैं ना, तो योगिक एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट में दिस इज क्लैपिंग थेरेपी। देखिए आज आपका शरीर में जो एनर्जी लेवल फ्लो होगा आज महसूस करेंगे। व्हाट इज द पावर ऑफ योग एंड मेडिटेशन। एक उंगली से ताली बजाते हुए 2 3 4 5, फिर पूरा क्लैपिंग करना है मेरे साथ। चले, 1-2 लोग रेस्पॉन्स करेंगे? Yes, sir. कम से कम 2-3 लोग तो बात करें। सब लोग, आप लोग यू ऑल बिलोंग्स टू टीचिंग कम्युनिटी। आप लोग के साथ जब आप स्टूडेंट्स, आप जब क्लास लेते रहेंगे, आपका स्टूडेंट्स इस प्रकार बंद करके रखेगा तो क्या आपको लगेगा? आप जैसे करते हैं वैसे ही रिटर्न मिलेगा। याद रखें, ये प्रकृति जो है वैसे ही वापस देगा आपको, है ना। आप तो चलिए जोरदार क्लैपिंग करते हैं पूरा 100%। एक उंगली से, 1 उंगली। रेडी? It is going to the very powerful process of clapping therapy. Next, ये पर्वत है, इसको पर्वत बोलते हैं। Side. Next. Very powerful clapping therapy. कैमरा ऑन करके रोज 1 घंटा अपने शरीर को दे। देखिए कैसे एनर्जी, और जोरदार तालियां।
क्लोज योर आईज। हाथों में जो भी संवेदना हो रही है, शरीर में जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी टिंगलिंग इफेक्ट हाथों में हो रहा है, शरीर में जो भी हो रहा है, शरीर के साथ रहें, मन के साथ रहें, विचारों के साथ रहें। Enlightenment of hardware and software through yoga and meditation. This session under Faculty Development Program organized by Government Engineering College, Bilaspur, a very proud organization of Chhattisgarh. सभी से आग्रह once again कि आप कैमरा ऑन करें, सिर्फ दर्शक बन के ना बैठें। नेक्स्ट, टैपिंग थेरेपी। फर्स्ट क्लैपिंग थेरेपी था, नेक्स्ट टैपिंग थेरेपी। देखिए टैपिंग थेरेपी इतना पावरफुल है कि देखिए शरीर के छोटे मोटे आपके जो पेन है और सब दर्द सब चले जाएगा। चलिए टैप करें सबसे ऊपर, सहस्त्रार चक्र सबसे ऊपर। देखिए इस प्रकार उंगलियों से ऊपर टैप करें। आपको अंदर से आवाज आना चाहिए, बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं। इस प्रकार करेंगे। इट इज यूट्यूब में आप देखिएगा ची गोंग थेरेपी, ची गोंग, इट इज वेरी पावरफुल टैपिंग थेरेपी। ऊपर नेक्स्ट, जहां सिंदूर लगाते हैं माथे पे टैप करें 10 टाइम्स, टाइम कम है अपने पास। नेक्स्ट, हाथों से पूरा आईब्रो के ऊपर, आईब्रो के ऊपर और आंख के नीचे। देखिए फीमेल में देखा आंख के नीचे पूरा कालापन कई लोग का होता है और जेंट्स में आंखों के नीचे स्वेलिंग होता है। तो ये टैपिंग थेरेपी से ये पूरा इसको रिड्यूस करने में मदद मिलता है अच्छा से। देन बीच में नोज के नीचे एक्यूप्रेशर, नोज के नीचे टैप करें उंगली से, नोज के नीचे, नोज के नीचे, नीचे दाढ़ी। आराम से प्यार करें अपने आप को, करें, मुस्कुराएं। 10:10 इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी कैमरा कोई ऑन नहीं किया, एक ही कैमरा ऑन दिख रहा है बस। ओके, अब धीरे धीरे अपने चेस्ट, हाँ बहुत बढ़िया, सेकंड कैमरा चेस्ट, आराम से प्यार करें, आराम से टैप करें। देन स्टमक, स्टमक जिसका डाइनिंग टेबल बन गया है सब ठीक हो जाएगा इस विचार के साथ। स्टमक, देन घुटना, नी को टैप करें, नी को टैप करें और नी को इस प्रकार मसाज करें और कंधे को उठाएं। शोल्डर एंटी क्लॉकवाइज एंड रिलैक्स। जब भी रिलैक्स बोलूंगा उसके बाद थोड़ा देर आंखें बंद कर लें। क्लोज योर आईज। शरीर में जो भी हो रहा है पूरा शरीर के साथ रहें, 100% रहें, मन के साथ रहें, मस्तिष्क के साथ रहें, विचारों के साथ रहें। क्लोज योर आईज। करोड़ों खरबों रुपए के शरीर को हमें स्वस्थ रखना है, दवाइयों से मुक्त होना है। दवाई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारे अंदर ही प्राणायाम, सांसों के जरिए मैक्सिमम प्रॉब्लम कैन बी क्योर्ड। प्राणायाम नेक्स्ट हम करते हैं, प्राणायाम। प्राणायाम के लिए सब रेडी हैं? कम से कम बोले तो आदरणीय गुरुजनों। यस यस, थैंक यू। देखिए जब सुबह उठते हैं ना, प्राणायाम करना है या योग करना, आप लोग सब करते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। ये दिस इज नॉन अ सुखासन। ये जो बैठा हूं सुखासन है, इट इज अर्ध पद्मासन एंड इट इज वज्रासन। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के पश्चात परमिटेड है। खाना खाने के पश्चात जब भी आप लंच करते हैं, डिनर करते हैं, कम से कम 15-20 मिनट वज्रासन पे बैठें। वज्रासन पे बैठेंगे तो कभी भी आपका स्टमक में डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्टमक में कोई भी जो एसिडिटी है ये सब नहीं होगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो वज्रासन में बैठे आराम से। तो हम करते हैं प्राणायाम। प्राण को आयाम देने वाली शक्ति,
भस्त्रिका प्राणायाम से स्टार्ट करते हैं। डीप इनहेल एंड एक्सेल ऑफ ब्रेथ, गहरी सांस लेना छोड़ना, थोड़ा थोड़ा करेंगे क्योंकि 11:15 तक मुझे समय दिया गया है। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका मीन्स डीप इनहेल एंड एक्सेल ऑफ ब्रेथ। जिस रिदम से सांस अंदर ले रहे हैं उस रिदम से सांस लेना। चलिए इस प्रकार सांस अंदर भरें। ये पूरा प्रोसेस है, इसके साथ ही हम मेडिटेशन आगे करेंगे तो फायदा मिलेगा। जो भी बैठे हैं सबसे करबद्ध निवेदन है आप बैठ के करें, सिर्फ देखिए नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यहां से बहुत ऊर्जा आप तक पहुंचेगी। गहरी सांस लें, अंदर लिया हुआ सांस आपको ऊर्जा प्रदान करेगी और बाहर खाली किया हुआ सांस आपको विश्राम दिलाएगी। कंटिन्यू करें, आंख बंद रखें और 100% करें। 100% समर्पित भाव से, दिव्यता के साथ, उमंग के साथ, एनर्जी के साथ, मुस्कान के साथ, दिव्यता के साथ गहरी सांस भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। डीप इनहेल एंड एक्सेल ऑफ ब्रेथ। जिस रिदम से सांस को अंदर ले रहे हो उस रिदम से खाली करने को भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। विश्राम करें, रिलैक्स रिलैक्स करें, रिलैक्स। नेक्स्ट नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं। राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल्स को बंद करके लेफ्ट से गहरी सांस भरते हैं और राइट से खाली करते हैं। इसमें माइग्रेन पेन, पार्किंसन, जो बच्चों को आंख से पानी आता कंप्यूटर देखते समय, चश्मा का पावर कम हो जाता है, आंखों का पावर बढ़ जाता है, इतना पावरफुल है। डर जिसको अननोन फियर है, चलिए करें। राइट से लें, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू। कंटिन्यू करें। अनाड़ी शुद्धि प्राणायाम करें, पूरे एंटायर नाड़ी को शुद्ध करता है, उसमें शक्ति भरती है। लेफ्ट से लिए, राइट से खाली किए, इमीडिएट रिजल्ट, वेट करने की जरूरत नहीं। कई लोग का एक नाक बंद हो रहता है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है, लेते रहें, छोड़ते रहें। विश्राम करें, रिलैक्स। अब जॉइंट रोटेशन करते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें, बहुत धीमी गति से आंखें खोलना। जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया, जब आंखें बंद करते हैं, while opening you should open your eyes, while blinking your eyelid, because eye is the door of our brain। आंख जो है हमारा मस्तिष्क का द्वार होता है, इसलिए आंख जब खोलते समय बहुत धीमी गति से आंखें खोलना है। जान है तो जहान है, अच्छा हेल्थ है तो जीवन अच्छा है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। तो अच्छे से आप चलिए बॉडी रोटेशन करते हैं। सांस को भरते हुए सबसे पहले बॉडी के एक जॉइंट्स को रोटेट करते हैं। अच्छा, मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, हमारे शरीर का सबसे ऊपर का कौन सा ऐसा भाग है जिसको रोटेट कर सकते हैं? सबसे ऊपर ऐसा कौन सा अंग है जिसको हम रोटेट कर सकते हैं? यस, कैमरा ऑन हुआ, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। गर्दन को रोटेट कर सकते हैं। स्माइल, ब्लेस यू। आप बता सकते हैं कि ऊपर में ऐसा कौन सा अंग है जिसको हम घुमा सकते हैं, विच वी कैन रोटेट? हेड। हेड। और कोई आंसर कोई बोल सकता है? आईज। वेरी गुड, ये सही जवाब, राइट, आई। आंख जो है, आंख को रोटेट। चलिए सांसों के जरिए पूरे शरीर को रोटेट करना हम आज करते हैं।
गहरी सांस लें, छोड़ें, कंजूसी नहीं करेंगे। रोटेशन के साथ आपको नाक से सांस लेना है, छोड़ना है। नाक से लिया हुआ सांस आपका ब्रेन पूरा टच करते हुए, गले से होते हुए, आपका डायफ्राम से होते हुए स्टमक में भरता है। उसके पहले और एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, एक बार राइट हैंड को स्टमक में रखें। प्लीज प्लेस योर राइट हैंड ऑन योर स्टमक और गहरी सांस भरें। सांस भर के खाली करें। अब ये बताइए, आप जब सांस लिए थे तो कितनों ने महसूस किया कि सांस लेने के बाद योर स्टमक इज कमिंग आउटसाइड, और कितनों ने महसूस किया योर स्टमक इज गोइंग इनसाइड? आपका पेट बाहर आया कि अंदर गया सांस लेते समय? मेरा क्वेश्चन, प्लीज आंसर मी। एक बार सांस पेट में छू के सांस भर के देखें। पेट अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है? अंदर। सांस लेते समय अंदर आ रहा है। अंदर आ रहा है, बाहर समय बाहर अंदर आ रहा है, छोड़ते समय बाहर आ रहा है। ओके, छोड़ते समय बाहर जा रहा है। पैरामीटर इज, हम व्हेन वी फिल द एयर इन द बैलून, व्हाट हैपेंस? बैलून फूलता है। इस प्रकार जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए, हमारा पेट फूलना चाहिए, और सांस खाली करते समय पेट अंदर जाना चाहिए। ये जो इसका जो इनहेलिंग का जो सबसे बेस्ट परफेक्ट तरीका है। चलिए अब रोटेट करते हैं। इस प्रकार अंगूठा सामने रख लें और आंखों को रोटेट करते हैं। समय सीमा बहुत कम है। चलिए आंखें गोल घुमाएं, गर्दन को नहीं हिलाएंगे। गहरी सांस लेते हुए गोल, अब हैंड रोज करना है तो एक कैसे होगा? जिसका अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, सिस्टम, न्यूरो प्रॉब्लम, सब धीरे धीरे कंप्लीट। आप ऊर्जावान, ओजस्वी, तेजस्वी बन जाओगे। आंखों को घुमाना है गोल गोल। गहरी सांस भरते हुए विश्राम कर लें। अब सांस भरते हुए सीलिंग की ओर देखें, ऊपर देखें, गले को, गले का रोटेशन ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे। अब सांस भरते हुए दाहिनी ओर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आराम से घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सांस भरते हुए, सांस खाली करते हुए, कंजूसी ना करें। उल्टा, गले में जो भी प्रॉब्लम है, आपका सर का पेन है, हर चीज इसमें सोल्यूशन। विश्राम कर, रिलैक्स। अब हाथ मिलाए। हाथ 5 जॉइंट होते हैं हमारा, जॉइंट्स इन आवर हैंड। एक बार देख लीजिए। दिस वन, फर्स्ट जॉइंट, फर्स्ट, सेकंड इज दिस वन। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? बहुत कुछ है इस मुट्ठी में, इतना शक्ति है। एक्यूप्रेशर का पूरा पॉइंट है। तो इस प्रकार सेकंड, थर्ड, थर्ड रोटेट करें। थर्ड जॉइंट देखिए, फर्स्ट जॉइंट दिस वन, सेकंड दिस वन, थर्ड दिस वन, फोर्थ, और कैमरा ऑन कर लें तो कितना अच्छा होगा। आप लोग गुरुजन, आप लोग के साथ भी आप लोग को जब आप लोग जब पढ़ाओगे ना, तो आप लोग के स्टूडेंट्स भी ऐसे ही करेंगे। आप देख लीजिए। चलिए चलिए चक्की, एंड उल्टा, रिलैक्स, विश्राम कर लें, आराम से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे में मुस्कान।
देखिए ये जीवन है, लाइफ को हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए जिए, क्योंकि मेरे साथ अगर गुनगुना सकते हैं तो आप गुनगुनाएं। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जीओ। थैंक यू। वेरी सो जो है आप लोग में एक ऊर्जा भरेगी। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट सुनते हैं, टेक्निकल प्रोग्राम्स देखते हैं। ये जो है आपका शरीर के लिए, आपका मन के लिए, आपका मस्तिष्क के लिए, आपका जीवन के लिए है। अगर आपका शरीर अच्छा होगा तो ये पूरा प्रोग्राम आपको आत्मसात करने में फायदा होगा। तो आगे हम और बढ़ते हैं। मंडूकासन। अच्छा, इसमें कोई है जिसको प्रॉब्लम होता है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, जिसको नींद कम आती है, ऐसे कोई है तो आप शेयर कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम। ये जो पोज दिख रहा है इट इज मंडूकासन, इसको खाली पेट में करते हैं। मंडूकासन देखिए, जिसको डायबिटीज है, जिसको जो है प्रमेह है, डायबिटीज, उससे उनका क्या है, तो पैंक्रियास वीक हो जाता है, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता। मंडूकासन बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। वज्रासन अगर आप बोलेंगे तो मैं परफॉर्म करके दिखा दूंगा, अगर आप चाहें तो आप बोल सकते हैं। मंडूकासन जो है बहुत ही अच्छा क्रिया है, जिसको खाली पेट में करना चाहिए। आगे सूर्य नमस्कार आसन। देखिए, आई हैव गॉट ट्रेनिंग फ्रॉम निमहांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस से हम ट्रेंड हैं। तो हमको जो ट्रेनिंग के दौरान कहा गया है कि सूर्य नमस्कार आसन ही एक ऐसा आसन, अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, इफ यू आर नॉट एबल टू डू एनी टाइप ऑफ प्राणायाम, आसनास और एनीथिंग, you should go for Surya Namaskar Asana. 12 stages of Surya Namaskar Asana will make you mentally strong, make you physically strong. इतना पावरफुल है 12 स्टेज ऑफ सूर्य नमस्कार। देखिए, सबसे फर्स्ट है प्रणमासन, सेकंड है हस्तोत्तानासन, थर्ड है पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कारासन. Why this आसन is known as अष्टांग नमस्कारासन? Because 8 part of our body touches the earth. हमारे शरीर का 8 अंग जो है जमीन पे टच होता है, इसीलिए इट इज नॉन एज अष्टांग नमस्कारासन. भुजंगासन, भुजंग मीन्स स्नेक, सांप, कोबरा सांप. भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, हस्तोत्तानासन एंड प्रणवासन. 7 होता है इसमें टोटल, बाकी रिपीटेशन होता है. रोज सूर्य नमस्कार आसन करें सुबह, जो है सन सैल्यूटेशन, ये आपका शरीर में एक नई ऊर्जा का प्रवाह करेगा. जिसको न्यूरो वीकनेस है, जिसका मानसिक स्तर जो है बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन है, लगता है कि मैं थोड़ा सा अंदर से वीक हो रहा हूं, इस प्रकार के जो गलत ख्यालात आते हैं, उनके लिए सूर्य नमस्कार आसन बहुत अच्छा है. उनके लिए गहरी सांस लेना छोड़ना बहुत अच्छा है. अगर आप स्वस्थ हैं, मानसिक तौर पे अच्छे हैं, तभी आप हर चीज रंगीन जो है कलर्स को महसूस कर सकते हैं. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अदरवाइज आपका लाइफ जो है ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा. ये पूरा करने के बाद लास्ट देखिए, चेयर आसन, चेयर सूर्य नमस्कार आसन भी है. जो कर नहीं पाते ना, वो मैं करवाता हूँ. सीनियर सिटीजन लोगों का जो प्रोग्राम होता है उसमें मैं करवाता हूँ. चेयर में बैठ के सूर्य नमस्कार आसन कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल है. तो आगे बढ़ते हैं. आप लोग कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ. शवासन, लास्ट में कुछ भी करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे या कुछ भी करेंगे, लास्ट में जरूर शवासन पे लेटें. शवासन पे लेटने से आप जितनी भी क्रिया किए हैं उसको अब्सॉर्ब करने में आपका शरीर में मदद मिलता है, शरीर को मदद मिलता है. तो शवासन पे लेटेंगे. चले, अभी तक क्लियर है आप लोगों को? प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे. यस सर, यस सर. ओके, 2-3 कैमरा बस ऑन है.
इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोग का शरीर के लिए, आपका मन के लिए है, आप लोग को इंटरेक्ट होना चाहिए। चले मेडिटेशन। अच्छा मेडिटेशन करें, आप लोग कर सकते हैं, 2-3 आवाज आ सकती है, मेडिटेशन करें। आर यू रेडी फॉर मेडिटेशन? Yes, sir. Yes, yes. We are ready. यस। आज मैं एक बहुत वंडरफुल यात्रा में ले जाऊंगा आप लोग को, बहुत सुंदर जर्नी में ले जाऊंगा। तो आप लोग को 100% करना है, पूरे हर चीज को छोड़ते हुए, कुछ भी डिस्टर्बेंस टर्बुलेंस है आपके आसपास में छोड़ते हुए बस समर्पित 10 मिनट बैठे, देखिए उसका असर क्या होगा। इस जर्नी के दौरान मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि अगर आपका हंसी आए तो हंसी को ना रोके, मुस्कान आए तो मुस्कुराहट को ना रोके, अगर रोना आए तो आंसुओं को नहीं रोकेंगे। इस जर्नी के दौरान इट इज नोन एज द पावरफुल वे ऑफ विजुअलाइजेशन, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ये मेडिटेशन पद्धति है। इफ आई विल रिक्वेस्ट यू टू विजुअलाइज एन एप्पल, मैं एक एप्पल को देखने बोलूंगा, यू हैव टू make the image of an apple and you have to visualize that apple, उस एप्पल को देखना है। अगर मैं आपको बोलूंगा एक पर्वत को देखें तो एक पहाड़ को देखेंगे, इस प्रकार आपको मन में विजुअलाइज करना है। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इतनी शक्तिशाली क्रिया है, इसके बाद आप खुद बताएंगे हमें। चलिए मैं आंख को बंद करने बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, एट दैट टाइम यू हैव टू क्लोज योर आईज, और मैं जब तक until and unless I request you to open your eyes, आपको आंखें नहीं खोलना है, बिकॉज आई इज द डोर ऑफ आवर ब्रेन। आंख जो है हमारा मस्तिष्क का द्वार होता है, इसलिए आंख जो है खोलते समय बहुत धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, धीमी गति से अपने परिसर के प्रति सजग होते हुए, शरीर के प्रति अवेयर होते हुए धीरे धीरे खोलना है। देखिए आज आपको मैं आपके घर ले चलूंगा, उस घर में जहां पर आपने बचपना गुजारा था, वेयर यू हैव स्पेंड योर लाइफ चाइल्डहुड डेज। बचपन आपका गुजरा था, आपकी छोटी सी बहन, छोटे भाई, आपके छोटे छोटे पड़ोसी दोस्त, आपके मम्मी पापा को सबको देखेंगे आज। इस दौरान आंखें पूरी तरह बंद रखें और मेरे इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, दर्शक बन के नहीं बैठेंगे। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, डोंट बी एन ऑडियंस इन दिस प्रोग्राम, बी इंटरेक्टिव, मेरे साथ करें। चलें, बहुत पावरफुल क्रिया है। आंखें बंद कर ले, मैं जो विजुअलाइज करने बोलूंगा आपको विजुअलाइज करना है। पूरी तरह आप आंखें बंद कर ले और कंफर्टेबल बैठ जाएं, जैसा कंफर्ट है आराम से बैठ जाएं। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। I request one and all to close your eyes and sit comfortably as per your convenience, as per your convenience. धीरे धीरे अपने चेहरे को देखें, visualize your face as if you are standing in front of the mirror. इतनी शक्तिशाली क्रिया है, आपका तनाव दूर करने में बहुत मदद मिलेगा। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अपना चेहरे को आईने के सामने आप खड़े हो और अपने आप को देख रहे हो, विजुअलाइज करें। एंड थैंक्स टू द पावरफुल क्रिएशन, उस सर्वशक्तिमान को धन्यवाद करें जो इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर चेहरा आपको दिया है। इस दुनिया में ऐसे कई लाखों लोग हैं जो सुबह की रोशनी नहीं देख पाते हैं। ऐसे कई लाखों लोग हैं जिसको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होता है। ऐसे कई लाखों लोग हैं जिसको कभी स्कूल का द्वार नहीं देखे। ऐसे कई लाखों लोग हैं जिनका कोई रिश्तेदार नहीं है, माता पिता नहीं है। हम सब कितने सक्षम हैं, कितने लकी हैं टू हैव दिस वंडरफुल लाइफ, वंडरफुल बॉडी, वंडरफुल वर्ल्ड। फिर भी we used to have complaint with our life, फिर भी हम रोज हमारा जीवन के प्रति हम शिकायत करते हैं। इतना सुंदर जीवन होने के बाद भी आंखें बंद रखें, बिल्कुल आंखें नहीं खोलेंगे। अब मन की आंखों से उस घर को देखें जहां पर आपने बचपना में अपना चाइल्डहुड डेज बिताया था।
बचपना गुजारा था, मम्मी पापा के साथ खेलते हुए देखें, उस छोटे से घर को देखें, घर है नहीं है दैट डजंट मैटर, बट उस घर को याद करें। विजुलाइज द मेन एंट्रेंस ऑफ योर होम, चाइल्डहुड होम, जहां आपकी गुड़िया, छोटा भाई, छोटी बहन और पड़ोसी दोस्त के साथ खेला करते थे, बिना किसी गम के, बिना किसी नाराजगी से। उस दोस्त को मन में याद करें जो बचपन में आपके साथ उंगली पकड़ के खेला करते थे और कई सालों से अब आप उनके टच में नहीं है, किसी ना किसी कारण से आप उनके टच में नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका वाइब्स जो है, आपका वाइब्रेशन जो है, आपका ऑरा जो है, वाइब्रेशन आज उनको टच कर जाएगा। आंखें बिल्कुल बंद रखेंगे, आंखें बिल्कुल किसी स्थिति में नहीं खोलेंगे। मम्मी पापा का चेहरे को देखें, विजुलाइज द फेस ऑफ योर माता पिता। माता पिता के चेहरे साक्षात ईश्वर है। हमने ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वाहेगुरु, हमने किसी को साक्षात नहीं देखा है। माता पिता ही साक्षात सर्वशक्तिमान है। उनको विजुलाइज करें, महसूस करें, उनसे बहुत आशीर्वाद आज मिल रहा है। You are undergoing through the very powerful process of power of visualization, meditation. आप अपने घर पे हैं, माता पिता के साथ हैं, छोटे भाई बहन के साथ हैं। आप छोटे, बहुत छोटे समय को याद करें, जब आप छोटे बच्चे थे, जब आपका याददाश्त आपको जब से आना चालू हुआ तब से। घर के आंगन में, वरांदा में छोटे आपके भाई बहन के साथ खेलते हुए देखें। पिता के साथ उंगली पकड़ के घूमते हुए देखें। माता, मम्मी जो है बचपन में आपको ब्रेकफास्ट खिला रही है, टेस्टी ब्रेकफास्ट, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, वो देखें। आंखें बिल्कुल बंद रखें। घर के उस जगह पे बैठ जाएं जहां पर आपको बहुत सुकून मिलता हो, आंख बंद करके। बाजू में राइट साइड आपकी माता, लेफ्ट साइड में आपके पिता। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, दोनों बैठे हैं। आंखें बंद बिल्कुल। जब जिंदगी याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डाटा भी तो सुने मुझे बोलो की तरह, क्यों नहीं बात सारी दुनिया तेरी तरह।
आंखें नहीं खोलेंगे, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, बहुत सी खुशियाँ, थोड़े गम है, बहुत सी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। धीरे धीरे वापस आ जाएं वहां से और आंखें बिल्कुल बंद रखें। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपने शरीर और परिसर के प्रति सजग होते हुए बहुत धीमी गति से, जब भी 100% लगे, जब भी पूर्णता लगे, बहुत धीमी गति से धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हो। यू कैन ओपन योर आईज वेरी स्लोली बाय ब्लिंकिंग योर आईलिड। सभी को मेरा प्रणाम एंड वंदन। कहते हैं सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदल दीजिए, मंजिलें अपने आप मिल जाएगी। इसके साथ मैं माइक को हैंड ओवर करता हूं टू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर। आप लोग का फीडबैक कैसे लगा प्लीज अगर चैट बॉक्स में भी लिखेंगे तो दैट विल मोटिवेट मी। कैसे रहा? एक्चुअली 3 आवर्स जर्नी है, इसको 1 घंटे में स्क्यूज किया है। कैसे लगा प्लीज आप बताएंगे? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। That was a nice journey. I learned something new. Thank you, sir. Thank you very much. That was really an engaging session, and I thank you so much for your time. And if there is any feedback from any participant, we can take 1 or 2. Very good session. It is required. As in the previous session also, peace of mind and happy and healthy life, how to survive. And through this yoga and meditation, it is much more essential. Otherwise, physical infrastructure will be there, but no physical and spiritual infrastructure of human beings can be developed. Thank you very much for your nice presentation. Thank you, sir. Thank you for your feedback, sir. Thank you. Thank you. I want to thank you, sir, for your valuable time to grace this occasion, and I also thank you for sharing your expertise with us. And I thank all the participants for their active participation as well. Thank you so much, all. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. So our next session will be in 1 or 2 minutes. I will see that the resource person from next session is here or not. Just a minute.